Good morning, students. Welcome to English class. Today we are going to discuss the next part of the running topic of English grammar, that is clauses. So let us start our discussion regarding our today's topic, clauses. First of all, definition. What do you mean by clause? Clause होता क्या है? Clause is a group of related words that contains at least one subject and one verb and is used as a sentence or part of a sentence. क्लोज एक ऐसे शब्दों का समूह होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है। यह एज ए सेंटेंस भी काम करता है और एज ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस भी काम करता है। व्हेन अ क्लोज हैज़ कंप्लीट मीनिंग ऑन इट्स ओन, अगर क्लोज का खुद का मीनिंग हो, इट डजेंट डिपेंड ऑन एनी अदर क्लोज, अदर सेंटेंस, इट कैन बी यूज्ड एज ए सेंटेंस। बट व्हेन इट हैज़ इनकम्प्लीट मीनिंग, जब इसका मीनिंग अधूरा हो, इट इज़ यूज्ड एज पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। मीन जब ये किसी दूसरे पे डिपेंड करता हो तो उसे एज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस काम करेगा ये। लुक एट द एग्जाम्पल्स। ही इज़ अ न्यूज़ रिपोर्टर, दिस इज कंप्लीट सेंस। दिस सेंटेंस कन्वे दिस सेंटेंस कन्वेज कंप्लीट सेंस। सेकेंड वन, शी लव्स म्यूजिक, दिस सेंटेंस इज ऑल्सो कंप्लीट इन इट सेल्फ। थर्ड, वेयर ही स्टेज, it is giving us half information, incomplete information, so it is as a part of sentence. Who lives next to my house, this is also part of a sentence. Next point, types of clauses. ये कितने प्रकार के होते हैं? There are basically two types of clauses, independent clause or you can say main clause, otherwise you can say principal clause. Second one is dependent clause, it is also called subordinate clause. First one, what do you mean by independent clause या principal clause? Independent clause is also called main clause, इसको main clause बोला जाता है और principal clause बोला जाता है, और dependent clause को सब clause भी बोला जाता है। अब independent clause होता क्या है? An independent clause has a subject and a verb, इसका खुद का subject होता है, खुद की verb होती है, and can stand alone as a sentence. In other words, you can say main clause is that clause which has its own meaning in itself, it doesn't depend on any other clause for its meaning. मतलब वो सेंटेंस, वो क्लोज जिसका खुद का मीनिंग हो, जो किसी दूसरे पर डिपेंड ना करता हो अपने मीनिंग के लिए, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लोज। दे वर्क इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट, व्हाट शैल वी डू, द कंपनी डिडंट परफॉर्म वेल लास्ट ईयर, मीन्स ऑल sentences are completed in itself. These sentences don't depend upon other sentences for their meanings. Next one is dependent clause. As the title convey the meaning, dependent. A dependent clause has a subject and a predicate, but it can't stand alone as a sentence. Otherwise, you can say dependent clause is that clause which depends upon the main clause for its meaning. वह क्लोज जो अपने मीनिंग के लिए मेन क्लोज पर डिपेंड करता है, इट हैज़ नॉट इट्स ओन मीनिंग, इसका खुद का मीनिंग नहीं होता। एंड देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सबॉर्डिनेट क्लोज। अगर इसको क्लासिफाइड करते हैं सबॉर्डिनेट क्लोज को, डिपेंडेंट क्लोज को, तो देर आर थ्री टाइप्स। फर्स्ट होता है एज ए नाउन क्लोज, सेकंड एडजेक्टिव क्लोज, एंड थर्ड adverb clause. Example of dependent clause like I was studying. I was studying, मैं पढ़ रहा था, has complete meaning. When he came in, जब वह अंदर आया, when he came in.
अभी व्हेन ही केम इन क्या है, डिपेंडेंट क्लोज है जो किस पे डिपेंड करता है, आई वॉज स्टडिंग पे। अगर हम आई वॉज स्टडिंग को निकाल दें यहाँ से तो क्या रह जाएगा, व्हेन ही केम इन, तो इट मीन्स इट हैज़ इनकम्प्लीट मीनिंग। सो नाउ लेट अस डिस्कस first part of subordinate clause, that is noun clause. A noun clause is a subordinate clause used as a noun. Otherwise you can say noun clause is that subordinate clause which perform function as a noun in a sentence. जो एज ए नाउन अपने फंक्शन परफॉर्म करता है. What you have proposed is acceptable. What you have proposed, this sentence is underlined and after this क्या है, is वर्ब एक बी फॉर्म आ रही है, तो इट मीन्स ये पहले वाला पार्ट क्या है, एज ए सब्जेक्ट, एज ए नाउन. टेल मी, मुझे बताओ. व्हाट योर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आर, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नाउन क्लोज. ये क्या है, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ नाउन क्लोज. सेकेंड वन इज adjective clause. An adjective clause is that subordinate clause which function as an adjective in a sentence, या फिर that modifies a noun or a pronoun, जो उसको modify करता noun pronoun को. For example, the man who is standing over there is a product development manager. There is also two types of adjective clause. First, defining adjective clause. Second, non-defining. Defining क्या होता है, it define its antecedent, जो अपने antecedent को define करता है. यहाँ पे देखा ना, the man who is standing, कौन सा व्यक्ति जो खड़ा है वहाँ पे, वो क्या है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट मैनेजर है. और सीधा लिख दें, द मैन इज़ अ प्रोडक्ट डेवलपमेंट मैनेजर. हम किसकी बात करें, कौन सा आदमी, हु इज स्टैंडिंग ओवर देयर, जो वहाँ खड़ा है वो मैनेजर है. ठीक है. अनदर सिंपल वे टू फाइंड इज इट एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लोज. आंसर द क्वेश्चंस विच वन एंड व्हाट काइंड. इसके आंसर मिलते हैं तो देन यू कैन इजीली फाइंड आउट दिस इज adjective clause. Usually begins with a relative pronoun such as who, whom, whose, which or that. जो adjective clause होते हैं ये relative pronoun से start होते हैं. Example, she is a person who truly loves bicycling. Next one is dependent clause, adverb clause. Adverb clause कौन सा होता है? An adverb clause is a subordinate clause that modifies a verb or an adjective or an adverb. It tells us when, where, how, why, to what extent or under what condition. Adverb clause क्या होता है? Adverb clause is that subordinate clause which function as an adverb in a sentence. इसकी beginning किससे होती है? इसमें आपको मिलते हैं adverb clause of time, adverb clause of place, adverb clause of manner, reason, result. Okay, here if the products are fit for the customers, we will maintain sales increase of 10%. क्या कंडीशन है, इफ़ अगर ये प्रोडक्ट फिट है तो 10% सेल इंक्रीज हो सकती है, अगर नहीं है तो नहीं होगी. देयर विल बी सम प्रमोशन, कुछ प्रमोशंस होंगी व्हेन, जब द न्यू प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल. अगर आपको इनके आंसर मिलते हैं हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड अंडर व्हाट कंडीशन, जैसे यूजुअली बिगिंस विद सबऑर्डिनेट कंजक्शन, ये स्टार्ट किससे होते हैं, एडवर्ब क्लोज. एज, बिकॉज, बिफोर, इफ, सिंस, देन, दाउ, अनलेस, अनटिल, व्हेन, व्हेनेवर, वेयर, वेयर एज, वेयर एवर. तो ये सारे वर्ड इससे, ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन से स्टार्ट होते हैं. नाउ try to find out which one is independent clause, or other word you can say main clause, and which one is subordinate. When the sun set,
incomplete meaning, it means subordinate clause, dependent clause. Most people know that camels are subborn. Main clause, you can say independent clause. He paid a low price. It has complete meaning, it means independent clause. Which he bought on sale. Which he bought. So it means independent, not independent. It is dependent clause, means subordinate clause है ये. Before automobiles were available. ये भी क्या है? Subordinate clause है. And where you ride is your choice. So dear students, today we have discussed second part of this topic. So I request you to listen it twice and thrice to understand each and everything. So till then, thanks and have a nice day.